intercollegiate 1 week lecture series, and we have tried our level best to provide something new for the students. So today's topic, it is a emerging topic because in this budget, our finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman, she have introduced that we should have our own digital currency, and that is why in coming days, India will be going for our own digital currency. But it was already exit at the world level, global level. That was in the form of Bitcoin and the cryptocurrency. But our government is not allowing any Bitcoin or cryptocurrencies because if you have been heard on the television, there is a different types of scandal and frauds with reference to this cryptocurrency, and that is why our government is not allowing the rest of the country's digital currency in our country. India will have own digital currency, and this is a new topic. It is a emerging challenges before the many economies, and that is why today we have invited Professor Vittal Sontakke to deliver his speech on this emerging topic. So without much delay, I request Professor Sontakke to start with the lecture. Sir, so Thank just you, a minute, sir. sir. Chandra sir, before requesting sir to say few words or start his lecture, I would like to introduce sir, just some things about him. Yes. Professor Vittal Sontakke sir is a vice principal in Deccan Education Society's Kirti College of Arts, Commerce, Science, Dadar, Mumbai. He has teaching experience of more than 15 years of UG and PG students in economics. He is basically a textile engineer from VJIT in Mumbai and worked in the textile mills for 12 years. He is a course writer for IDOL for UG and PG syllabus in economics. He had written textbooks for TYBA, that is in Marathi growth and development subject, with the reputed publisher, State Publication, and sir has engaged with social activities for Jan Kalyan Samiti for students and society in Dadar area. So these are some glimpses of sir's work. आणि यानंतर मी सरांना विनंती करतो की सरांनी आजचा जो टॉपिक, जसं शिंदे सर बोलले की खूप ज्वलंत विषय, आणि या ज्वलंत विषयावरती क्रिप्टोकरन्सीज पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर फॉर इंडिया या विषयावरती आपलं मनोगत व्यक्त करा. Share screen करू ना मी सर? Okay. हो सर. Am I audible? हो सर, क्लिअर. Thank you, and I would like to express my gratitude for the Pragati College. Dr. Shendre sir has given me an opportunity to speak on this topic, which is a very hot cake of the day, and I would like to spread more awareness about this cryptocurrency, which is a buzzword of today, and every young guy or everyone is very, very enthusiastically looking at this subject. So once again, I am thanking to the management of Pragati College for giving me an opportunity and invited me for this lecture series. And I'm going to start now for my subject. I will share my screen with you. One second. Yes, is it visible, sir? Hello? So screen दिसते का? हा, दिसते सर. हो.
One second. So this is the topic of the day, that is the cryptocurrencies, their past, present, and future for Indian economy. Uh, I would like to add a very up-to-date information for our students who are very, very enthusiastic about this. Everyone has heard the name of Bitcoin and Litecoin and other different types of coins. For in the today's world, there are many exchanges that emerged, Coin DCX and Kuber. So these all are exchanges today inviting, or they are, they are attracting our young generation as well as the present investors in the share market for this investment in this crypto world. So crypto world is a really very enthusiastic, we can say. It's a very enthusiastic, and because of that, everyone has a curiosity how we can earn easy money in this crypto world. So what is a cryptocurrency? We will start basically from that. Cryptocurrency, it is an innovative concept of decentralized virtual currency. It is not a reality, it is a virtual, it is a creation of a technology. And that's why with the evolution of technology, the new technology called blockchain technology emerged over the years in the revolutionary reforms by the internet people, software engineers. And in 2008, the person named Satoshi Nakamoto, he's a questionable that whether he exists or not, but he has developed this concept of Bitcoin in 2008. So till 2017, there was not much more buzzing about this Bitcoin as a virtual currency. I am a professor of economics. Still, I also teach. We teach the capital markets. I personally make investment in share market, but I was also little ignorant about the existence of Bitcoin, because no, it is a virtual currency and it is not useful for us. Our country is from the beginning we have banned this trading of this currency, and that's why I was not much about investigating about this existence of virtual currency. But last year, when the government has made the bill in Lok Sabha, called as the Cryptocurrency and Regulation of the Official Digital Currency Bill 2021 on 23rd November 2021, and this whole crypto world was totally, revolutionized. Totally एकदम त्या क्षेत्रामध्ये अंधाधुंदी झाली, सगळी हलचल झाली सगळी. And then because in cryptocurrency also, Indians are investing more than 6 lakh rupees in Indian currency into this cryptocurrency trading or the exchanges across the world. So Bitcoin originated in 2008. Later we will see how it evolved over the period of time. There are many other digital the cryptocurrencies are there. That is called as a Litecoin, Binance Coin, that is a BNB, Matic. Matic is the Indian one, ADA, Atom, Shibu, etc., etc. If you read the names of those currencies, you will be surprised to know how the different names are there. So it's a very new concept, and advocates of this cryptocurrency say it is a replacement of the fiat currency. Fiat currency means whatever actual currency we use in our day-to-day life, like a rupee note, 100 rupee note, 2000 rupee note, euro, or the US dollar, etc. So cryptocurrencies, basically they are laden with the newest technology, and there is a huge worldwide market available for that. Even though their existence for from 2010 onwards, but it has not attained the established image as a new currency system among the majority of the currencies in the world, and the people still are skeptical about its worth because it's a virtual currency. The country known as one of the country, they have accepted this Bitcoin as their official currency,
They have given the only few countries which are very small and well developed. They have given their sanction to these cryptocurrencies, but majority of the world's countries like China, India, US, they have not yet given the official sanction to this currency. Though it is a traded on 24/7 basis all over the world, there is a no gap up, gap down opening, but still it is a virtual world. It is not a reality. It is based on the technology. So there are many doubts among the in the minds of the students, in the minds of the common man, in the minds of the common investors, whether to go for it or not. So all these things we will see today over here. So crypto world, this the government is very serious. Indian government serious and already started a process of setting a regulatory framework for all cryptocurrencies in the world. And cryptocurrency has created very unmatched changes in the financial markets, having both positive as well as the negative contributions. The one thing all of us has to think properly, why the government of India is not allowing these cryptocurrencies in India. We will come across the total analysis of the government side as well as the other side of the story, cryptocurrency story also, and then we'll move ahead with this. Now, in this speech, I'm going to tell you about the evolution of cryptocurrencies in the financial world, past and present status of cryptocurrencies trading in India, and government's policy for cryptocurrency and analysis of the trends in the cryptocurrencies trading, and future challenges of cryptocurrencies to Indian economy. This is the major topic of whether Indian economy will assimilate the cryptocurrencies or not. That time will decide that, but before that we will see the various things behind this crypto world. So cryptocurrency is one of the digital money. It is considered to be more secure than the real money. It's true, because the technology, that is the blockchain technology, which is developed, and on that basis this digital currency is evolved. So it is a very difficult to hack, difficult to hack this currency. And even though there are many incidences, some incidences are there before the blockchain technology was used for this Bitcoin. Theft of these currencies are also possible. The hackers are very well developed themselves. And this cryptocurrency is based on the cryptography. Cryptography is a method of converting comprehensible data into complicated codes which are tough to crack. That's why if you see anywhere in the world, if computer asks you the password, they have the condition your one of the letters should be capital, then the one special character should be there, your password should be minimum of 8 characters, it should contain alphanumerical password should be there. So why they ask you to do this? Because they want the cryptographically your passwords to be strong, and hackers should not hack, or they can have entry into your account. So that is the main motto of this cryptocurrency or cryptography. Now we'll try to understand what do you mean by this blockchain technology. It's a system. Blockchain technology is nothing but it's a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack, or cheat the system. Because human being is a very cunning animal, he can always try to earn easy money by way of what? Because of this internet technology, many hackers across the world, they try to theft the wealth of the other people by using this internet technology, right? So blockchain technology is essentially a digital ledger. लेजर का मतलब आप समझ सके, हम लोग हर एक जैसे बैंक में एक एक व्यक्ति का अकाउंट होता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का एक डिजिटल लेजर होना चाहिए, जिस उस आदमी ने जो भी कुछ ट्रेडिंग किया उसका अलग से लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन that is duplicated and distributed across the entire network of computer system on the blockchain. So it is an open source system.
So each block in the chain contains a number of transactions, and every time new transaction occurs on the blockchain, that record of that transaction is added to the every participant's ledger. So everyone can see, प्रत्येक जण ते बघू शकतो. And this decentralized database managed by the multiple participants is known as a distributed ledger technology, that is DLT. And blockchain is a type of DLT in which transactions are recorded with an immutable catographic signature that is called as a hash. So immutable means it cannot be hacked, it cannot be decoded by any third party person. So that's why blockchain is not only for cryptography. Blockchain technology is used for many other purposes. Even our UPI Bhim app, they are working on this. Even our pandemic recording of this 2 doses which has been given free of cost to the every Indian. So their recording has been kept on this blockchain technology, and that's why it is a very useful. It's a future, but cryptocurrencies is different than the blockchain technology. So if you become a blockchain developer, then you will have a bright future in the coming days. Now, this means that if one block in one chain was changed, it would be immediately apparent it had been tampered with. If any hacker tried to corrupt the blockchain system, he is not able to corrupt it, because he has to change every block in the world across the distributed versions of the chain. So it is easy to hack single person's account, but it is difficult to hack the whole chain process. And it is a continuously, that market is continuously working. So many new blocks are getting added. So blockchains such as the Bitcoin and Ethereum are constantly and continually growing as blocks are being added to the chain, and which significantly adds to the security of the ledger. So there is a great security. Now here, this is the diagram, how generally it is a diagrammatic, I say the representation of this cryptocurrency. I will show you another diagram which is a very well one. One sec. Yeah. Yes. Can you see the properly? See. Now here how it works. First, suppose there is a transaction between the two parties. So this time on screen. Hello. हो सर, स्क्रीन पण Yes, दिसते sir. आणि आवाज पण चांगला आहे. Yes. हा ना, दिसते म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही. So someone requests for a transaction, then this request from your computer, that is broadcasted to peer, that is a P2P network consisting of computers, that is known as a nodes. Then network of nodes validate the transaction and the user status using the known algorithms. Algorithms are already set. Then verified transaction can involve the cryptocurrency, contracts, records, or other type of information. Once this verified transaction is combined with the other transactions to create the new block of data or the ledger. So then it is, the new block is then added to the existing blockchain in a way what is permanent, that is permanent and unalterable, that cannot be changed, unalterable, and this transaction is complete. So this is the blockchain technology used for other transaction other than the cryptocurrencies. But if we want to see for the cryptocurrencies, what happened over there after this transaction is verified, in case of cryptocurrency, it is a medium of exchange created and stored electronically in the blockchain using the inscription techniques to control the location of monetary units and to verify the transfer of funds. And Bitcoin is the best example of it. So what are the features of this Bitcoin? That is, it has no intrinsic value, in that it is not redeemable for another commodity such as a gold. Secondly, it don't have the physical form, and it only exists electronically in the network. Its supply is not determined by the central bank, and the network is completely decentralized. So in case of Bitcoin, there is a
the source or the supply of the Bitcoin is limited up to the 21 billion. That much is the only creators of this Bitcoin. They have decided that they will keep the supply of cryptocurrency, that is the Bitcoin, will limited, and that's why the multiple times the price of the Bitcoins is risen over the period of years. That's we have seen. Now, there are different types of cryptocurrencies in the world. Today, there are more than 1,600 cryptocurrencies available, and their numbers are growing day by day. And many more people, they try to invent their own currencies, and they are trading on the world platform. So many people trying to get the easy gain, easy money from these cryptocurrencies, and that's why they are involving in the trading of cryptocurrencies. Now we'll see little information about the Bitcoins. So Bitcoin is a kind of digital currency where cryptography rules are used to control and generate the unit of currency. So Bitcoin comes under the umbrella of the cryptocurrency, and it is the first and most valuable among the known cryptocurrencies. It is the richest currency of all, we can say. Then second one is the Litecoin. We will see the features afterwards of the Bitcoin. So Litecoin is also, it's a form of cryptocurrencies, but it is known as a peer-to-peer cryptocurrency and available as an open source software project. It was released under the MIT X11 license. And in case of Litecoin, the creation and transfer of coins follows open source cryptography protocol and algorithm. So by technical comparison between the Litecoin is almost identical to Bitcoin. It is created as an alternative to the Bitcoin. So minor difference is the processing speed of network in both the cases. Means, for example, if a single transaction is a speed for single transaction on Bitcoin channel is at 10 minutes. So there was only 5 minutes are required for a Litecoin transaction to get it done. So in Litecoin network, speed is faster than Bitcoin, and also the algorithm that is used in Litecoin is different from the Bitcoin. So once new thing comes into the world, everyone try to create something different than other on the same line. Then Ethereum. Ethereum is the, after the Bitcoin, the most respected cryptocurrency is there, that is called the Ethereum. It is also the open source software platform which uses the blockchain technology, and this can be used to build and deploy the decentralized applications similar to Bitcoin. Ethereum is also distributed to the public to use as a blockchain network. And it is important difference between Bitcoin and Ethereum is that the way blockchain application platform is used in the both the cases. So whatever blockchain platform is used for the Bitcoin is different, and that is of the Ethereum is different. And Ethereum is mostly used for the building the contracts between the different parties. So Bitcoin work for one particular application where peer-to-peer transaction takes place, and only for Bitcoin. But in case of Ethereum, blockchain technology can be used for any decentralized application. That's why I said, okay, whatever pandemic records has been created for this our anti corona doses we are giving. So government of India using in that the blockchain technology. There are many more cryptocurrencies, but I'm just giving the names of them which are very, very famous. That is a Namecoin, Ripple, Aurora Coin, Monero, Zcash, Bitcoin Cash is there, Bitcoin Private is there. So all these different currencies are there. But right now I will try to explain you what are the features of Bitcoin. So Bitcoin don't have any intrinsic value. It cannot be redeemable. Just now, whatever we are doing on the international exchange, we are using fiat currency for purchasing Bitcoin. So again, if you see, Bitcoin is dependent on the legal tender money supported by the central banks in the world. So you can convert this Bitcoin in the dollars. You can purchase it for the euro, whatever other currencies, fiat currencies. But what is their main objective to replace the fiat currency is not possible. That is the basic difference, because every currency has some intrinsic value
depending on many many basics, or we can say many bases on which the every country creates its currency. So every national currency has some intrinsic value. आपको प्रीवियसली मालूम होगा कि इंडियन करेंसी 100 की रुपीस में एक चांदी की तार आती थी, एंड दैट वाज द that was the major recognition, symptoms, how to recognize the duplicate currency or the real currency. Then Bitcoin exists only in the network, so it don't have any physical value. We can't carry Bitcoin in our pockets like other commodities, so it cannot be determined from whom the money get transferred to which person on other side. मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ, I'm buying and selling the currencies, but I don't know the person who is sitting in front of me, and that's why there is a danger of the misuse of this currency for money laundering, for terrorist funding, and these are the major reasons why the government is not allowing cryptocurrencies in India. Secondly, its supply is not regulated by the central banks of the respective countries except few. Therefore, it is difficult to trace the transaction of the cryptocurrencies. अभी इसका अच्छा एग्जांपल है कि जब 2016 में इंडिया में नवंबर में नोट डिमोनेटाइजेशन हो गई, नोटबंदी हो गई, तो गवर्नमेंट को मालूम था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम था कि 15 लाख currencies of rupees 500 and 1000 rupee notes were issued in the currency. ये मालूम था आरबीआई के पास. And when all these currencies were returned back to the Reserve Bank of India, लोगों ने वापस किया, तो minute difference रह गया. इसके बीच में the money collected means around 14 lakh.90 lakh, that much currency of 500 rupees and 1000 rupees were by the government of India. तो गवर्नमेंट का एक उद्देश्य था कि हम लोग ब्लैक मनी जो यहाँ वहाँ छुपाया हुआ है उसको निकाल सके. तो इंडियन लोगों ने सब पैसा उनके पास था वो दे दिया. सो दैट्स व्हाई नाउ ओनली द 500 and 2000 करेंसी नोट्स आर देयर इन इंडिया. तो इस प्रकार की जो इंटरनल पावर है, फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, ये बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं है. Now, what are the issues or challenges associated with the cryptocurrencies? The first issue आता है रेगुलेशन, कि उसको रेगुलेट कौन करेगा? Who will regulate this currency? क्योंकि करेंसी या मनी, हमें भी करेंसी के जगह पे मनी यूज करते हैं. मनी तो आप सब लोगों को मालूम है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज इवॉल्व्ड ओवर ऑफ टाइम फ्रॉम द physical coins were there, then paper money came, then plastic money came, and now the electronic money come. And for every country there is a central bank and a government. Every central bank has its monetary policy to regulate the currency. But in case of cryptocurrency, in a word it is said it is a decentralized technology. तो decentralized technology का मतलब ये होता है कि उसको रेगुलेट कोई नहीं करेगा. तो जब कभी दुनिया में कोई भी ऐसे सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन निर्माण हो जाए, तब कौन उसको रेगुलेट करेगा? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिप्रेशंस आर देयर इन द एवरी इकोनॉमी. तो हु विल रेगुलेट हैंडल द सिचुएशन? एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज देयर फॉर इंटरवेंशन इन एवरी कंट्री. अदरवाइज नोबडी विल, इफ इट इज केप्ट डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं करेगा. लोगों को उस कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको सुधारने के, मेजर्स करने के कुछ अवसर उनके पास नहीं उपलब्ध होंगे. सेकेंडली द वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी के बारे में आप जानोगे तो आप दंग रह जाओगे कि क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. एक ही दिन में बहुत हाई होता है तो बहुत लो भी होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी, हार्ड अर्न मनी. हमारा जो आपला जो घामाचा पैसा आहे, आपण कष्ट करून कमवलेला पैसा आहे, तो एका मिनिटामध्ये जाऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी ही जी चढ उतार आहे भावामधले, हे फार भयानक चढ उतार आपण नंतर बघणार. मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशा प्रकारे तुम्हाला लाईव्ह मार्केटमध्ये पण. आता तुम्हाला माहिती आहे क्रिप्टोकरन्सी मार्केट 24/7 असतं आणि त्याच्यामध्ये किती चढ उतरतात हे आपल्याला लक्षात येईल. आपण थोड्या वेळाने बघूया ते. द थर्ड पॉइंट इज द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, किसी भी करेंसी को कुछ ना कुछ बैकिंग चाहिए. किसी भी गवर्नमेंट का, द सेंट्रल गवर्नमेंट
national government should back the currency. Then we can believe we have the trust with the currencies, governments or the central authorities, and they provide the securities, they give the assurance. So this kind of security term, because these cryptocurrencies are based on the blockchain technology, they are secure. But the kind of the moral support, it is not there in case of the what, uh, cryptocurrencies, because nobody knows who is a owner of that currency, who is supplying that currency, what amount they are supplying. These all questions are very, very unanswerable. The cost, again, the cost is very important sector, because everything, nothing is free of cost generated. Even though it is a electronic money, the technology that is called as a mining means production of the cryptocurrencies. So to create these currencies, they require the hi-fi technology, very new technology, and that's why the creation of this currency is very, very, very high. Once after creation, then it's transfer of fund from one person to another. It's very simple. It doesn't involve cost, but creation of this new currency is a very costly. The people's perception. So how the people of the world look at that these currencies, even today nobody believe in the what technology means, no believe in technology means virtual currency. वो मेरे दिखता है, मुझे मुझे मेरे हाथ में, मुझे physically it is not visible to me, and that is a big question for the people. एंड कंसिस्टेंटली देयर इज अ अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. आज 6 महीने के बाद और कोई टेक्नोलॉजी आएगी, ब्लॉकचेन के ऊपर की टेक्नोलॉजी आएगी, देन इट विल easily hack this blockchain also. Understood? But till this time, till this last 10 years, nobody is able to hack the Bitcoin. So that's why we can trust in the blockchain technology. But there is no guarantee that it is not impossible to do that. And there are many examples of theft of this Bitcoin from the single person's account, not from the blockchain, but as a single currency, many currency exchange. There were two, three, many events has been there where the hackers were successful in stealing the money, this cryptocurrencies of different types. Then risks for investors and users. तो इसका जो यूज कर रहे हैं दोनों के लिए उसका रिस्क ज्यादा है. अभी देखिए, हम लोग अभी देखते हैं इंडिया में कि 100 रुपीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, पहले 1 रुपी का था. आप आपके दादा को आपके पिताजी को, माँ बाप को पूछे तो दे हैव सीन द कॉइन ऑफ 25. आपके जनरेशन ने 25 का कॉइन भी नहीं देखा होगा, 50 पैसे का कॉइन, अभी 1 रुपये का कॉइन है. लेकिन उसकी रिस्क होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बाय इन्फ्लेशन गोज ऑन डिक्लाइनिंग. पहले 100 रुपए में बहुत कुछ आता था, अभी कुछ भी नहीं आता है. जो सिंपल कॉमन मैन जो फूड है, जिसको वड़ा पाव कहते हैं, उसका प्राइस 1 रुपया था, 1 रुपए से 2 रुपया, फिर 5 रुपए, फिर 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक आके कॉमन मैन का वो हो गया है. सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द मनी वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइनिंग. तो ये जो रिस्क है, तो ये मनी की वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है. बट इन केस ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसीज, बीइंग दे आर वेरी वोलेटाइल, ये जो डेंजर है उनकी वैल्यू का कम होने का और ज्यादा होने का, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग. सो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डजंट अलाउ द लीगल स्टेटस टू द क्रिप्टो करेंसीज? पहली तो बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट दे स्टैंड not providing a legal status for cryptocurrencies in India. For the reason behind this is the kind of decision from government held from the first, that the challenge of monitoring the decentralized transaction in cryptocurrencies are difficult to trace, which could be advantageous for the hackers, criminals, and also for the terrorist activities. So whatever the money is there, that can be used for the terrorist funding. ये भी हो सकता है. And the second reason, being the cryptocurrencies market could be leading competitor for the bank service industry. अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगी तो बैंक में कौन जाएगा? We will use the bank services. That is the big question, and one day this banking industry will totally collapse. Now, volatility, a great concern. I want to have some I want to show you some, light on the history of this Bitcoin.
Bitcoin is first generated on January 19 to 2009. 2009 to 2010, basically there was no value was there. No exchanges or market. Users were mainly cryptography funds who were sending Bitcoins for hobby purposes, representing low or no value. In March 2010, user smoked too much, auctioned this 10,000 Bitcoins for $50 only, but no buyer was found. But slowly क्या हो गया? Into November 2019, for the first time, the value of these cryptocurrencies rose from $150 to 200 in November, and later on it has gone to the 1,242 on November 2013. अभी इस टाइम से बिटकॉइन के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी. Again in March 2017, the value was traded at a high of $1,242 to 1,290. So this is the time from when the Bitcoin come into picture. It became the buzzword for all the people in the world. On 20th May 2017, its price touched to the $2,000, and in November 2020, it has reached to 19,850. During the pandemic, I am talking of the pandemic period, and the all-time high of this Bitcoin has achieved in this last month, that is in the December month, before November. It has touched to the level of $69,000. So its value in Indian rupees was around 51 lakhs. Just imagine. And it's on today's status is its value is around 36 to 37,000 US dollar. So we can say it has gone to the 51 lakh, and today its value is around the 27 lakh. So you can imagine what the fluctuation is. कि नवंबर में मेरे एक बिटकॉइन का वैल्यू 51 लाख का मैं मालिक था, और आज मैं 27 लाख का हो गया. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इट. So this is the price. See, it was evolved from 2010, but the price was very low in terms of dollar. In 2017, first it come into existence, then it is a lower. Again, it has come down, and suddenly in 2020, it has taken a big leap, and it has crossed the 60,000, and now it is a settle around the what 30,000. If I want to see, I will show you the live price of the Bitcoin on this. See over here, the present value of this Bitcoin is $37,144. It is in terms of what dollar. See how how do it fluctuates very fast. See, so here today it was the 37,000, then it has gone to $37,320. So $1 is equal to 70 rupees. भी हम लोग पकड़ेंगे तो भी from 3750 to 350. So it is a 300 rupees. So 300 into 70. So it is around 27,000, 21,000 का फर्क हो गया है. So in this way, see, these prices of these Bitcoins are fluctuating, and this is I have kept it for you to understand the real value of this, what is happening on the Bitcoin on international exchanges right now. So TradingView is a website from where we can just imagine. अभी ये सॉफ्टवेयर है, इसमें यहाँ पे सिग्नल दिया था बाय करने का, खरीदी म्हणजे बाय. So if you buy it over here, you will get this kind of profit. But again, if you buy over here, then it has come down, and again you can suffer a loss. See, within the second, now I have started to show you, it has increased by $100. See, so $100 into means how much? 7,000. Because if you keep the average value of $1 is equal to 70 rupees, so 70 into this, तो एक मिनट में इसका इतना प्राइस कम ज्यादा होता है. दिस इज द फैक्ट which is a very volatile, and nobody is able to, means the common investor is not able to assimilate such kind of such type of a volatility in the market. अभी देखो $300 भी हो गया. So you can see afterwards will come. So this kind of volatility is a very, तो उसके मीनिंग ये होता है कि हम लोग करोड़पति भी हो सकते हैं और रोड़पति भी हो सकते हैं.
मीन्स हमारा कुछ भी जा सकता है. देयर आर पीपल आर यूजिंग डिफरेंट वेरी वेरी हाई फाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स, ऑटोमेटिक ट्रेड होता है. अभी जो रिसेंट सिनेरियो है क्रिप्टोज का, मैं बताता हूँ कि मैंने पहले आपको बताया कि अपने विंटर सेशन में लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन, और तभी से ये क्रिप्टो मार्केट नीचे गिरने लगा है. एंड फ्रॉम 69,000 का हाई होने के बाद अभी वो नीचे आ गया है बिटकॉइन की वैल्यू. दिस बिल इज नॉट प्रेजेंटेड इन द विंटर सेशन बट इट इज इन प्रोसेस. गवर्नमेंट इज चेकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग दिस मनी. आपको थोड़ी सी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का ये जो सब चालू हो गया, तभी लोगों को लग रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन ये जो छोटे छोटे देयर वाज अ वेरी इट विल डिसाइड द ऑफिशियल outline of this cryptocurrency in India, but they have kept one loophole in this law that exclusion of any public important cryptocurrency from this ban. मीन्स एक छोड़ दिया कि जो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी अपने लोगों के लिए अच्छी रहेगी और जो टेक्नोलॉजी को अच्छा आगे लाएगी, और बेसिकली इफ इट इज यूजफुल फॉर पीपल देन ओनली इट विल बी गिवन परमिशन इन इंडिया. तो इस प्रकार का उन्होंने बताया गया है. सो व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट इंडियन चाहता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी क्रिप्टो को ट्रेडिंग कमोडिटी का दर्जा न दिया जाए. बिटकॉइन और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी से कंसर्न है. तो जो लोग हु आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड विद दिस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो इस कम्युनिटी को गिग्स कहा जाता है, गिग्स. तो आफ्टर 2016 कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो था, उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बिजनेस वर्ल्ड. लोगों को मालूम है कि पैसा बनाना चाहते हैं, दे वांट टू पीपल एंगेज इन द ट्रेडिंग बिजनेस. तो बाय डिमांड एंड सप्लाई किसी भी चीज का ट्रेडिंग चालू हो जाता है, आप लोगों को सबको मालूम है. सो क्रिप्टो करेंसीज ऑन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी चालू हो गए. कॉइन जीसीएस चालू हो गया, कुबेर चालू हो गया, क्यू कॉइन हो गया, बाइनांस हो गया. बट देयर आर मेन कंसर्न्स आर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सो मेनी क्रिप्टोज, कि ये जो सब क्रिप्टोज आ रहे हैं तो उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फॉर कॉमन मैन. These are the questions which are very very unanswered. So which problems these cryptocurrencies are going to solve? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये वर्चुअल है, ठीक है, बट मैं स्क्रीन के सामने बैठ के उसका खाली फोकट सिर्फ ट्रेडिंग करते रहूंगा, सिर्फ गैम्बलिंग करते रहूंगा. व्हाट इज द बेस? मैं किसी भी कंपनी का शेयर लेता हूं तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि इस कंपनी की मालिक कौन है, इसका बिजनेस क्या है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका सेल्स टर्नओवर कितना है, इसका पिछले 10 सालों में इसका क्या टर्न हो रहा है. बराबर है. तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जो बिली मार्क्स और जैक्सन पामर, ये दो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, इन्होंने ऐसे ही जोक करने के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी की क्रेज बढ़ रही थी 2011-12 में, तो उन्होंने सोचा कि इसको अपने कुछ थोड़ा सा मजाक किया जाए. तो दे हैव क्रिएटेड डॉजकॉइन. शिबू इनू जाति का जो एक कुत्ता होता है, उसका एक मीम इंटरनेट के ऊपर बहुत फेमस हो गया था. तो इसीलिए इन लोगों ने ये डॉजकॉइन नाम का सॉफ्टवेयर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया. अभी उनको मालूम नहीं था कि इसको कितनी सक्सेस मिलेगी. आप सब लोगों को मालूम है, जैसे होता है कि कोई भी सिंगर या कोई भी पिक्चर जैसे झुकेगा नहीं, एक डायलॉग के ऊपर पुष्पा पिक्चर बहुत फेमस हो गया है, राइट ना. तो ऐसे कुछ भी कभी भी किसी को पब्लिसिटी मिल सकती है, उसके कोई रीजन नहीं होते. तो इस शिबू कॉइन की, डॉज कॉइन की वैल्यू 2013 में विद इन 2 इयर्स 300% बढ़ गई. कैसे बढ़ गए उनको ही मालूम नहीं. और ट्रेड करके लोग उसको इतना डिमांड सप्लाई करने लगे. उस समय ज्यादा कुछ करेंसीज नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग उसकी कीमत बढ़ गई. तो जो दोनों भी थे, बिली मार्क्स और जैक्सन पामर, वो दोनों भी अचरज में हो गए. और पामर लेफ्ट दिस डॉजकॉइन एंड क्रिप्टो वर्ल्ड इन 2015. उसने कोट किया कि मैंने क्रिप्टोज ऐसे मजाक के लिए क्रिएट किया था, दो इट इज इनोवेटिव और फ्री डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोज है, बट नाउ इट्स हैज ओनली द टूल ऑफ ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. तो ये जो मैंने क्रिप्टो कुछ ऐसे ही तैयार किया था बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड बेस ऑफ इट,
लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ने इसका अलग फंडा चालू कर दिया, इसका उपयोग इसके लिए कर लिया कि उससे वो प्रॉफिट बना सके। तो जस्ट अ वे ऑफ अ गैम्बलिंग एंड एवरीवन वांट्स टू मेक दैट इजी मनी, तो उसकी वजह से हो गए। देन फिएट करेंसी जो, एक मिनट, हाँ, सो द फिएट करेंसी जो होती है, तो अब अपने देश की जो 500 की नोट है, 100 की नोट है, 1 रुपए की नोट है, दैट इज अ फिएट करेंसी, इट्स ऑफिशियल करेंसी ऑफ एवरी कंट्री। तो इस ऑफिशियल कंट्री को कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बिकॉज इट हैज द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और आपने इकोनॉमिक्स सीखा होगा तो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई जो होता है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स। और सेंट्रल बैंक जो होती है कंट्री की, वो ऑटोनॉमस होती है, उनको, because government don't know the economics is known by the central bank of the country, so central bank of the country manage the money supply to control the inflation and many other objectives of monetary policy। तो उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में मोदी जी ने एक रात में 8 बजे डिक्लेयर कर दिया कि आज से, कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो पूरी अफरा तफरी मच गई। आप सब लोगों को, पीपल रात को 12 बजे लोगों के लाइन लग गए, मीडिया ने उसको हाइप कर दिया उस न्यूज को, एंड नोबडी नोज कि क्या होगा इस पैसे का। तो उसी प्रकार की गवर्नमेंट की जो ये पावर है, गवर्नमेंट की या किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक की जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को विरोध करने वाले कोई लोग थे, उसमें फ्रेडरिक हायेक था, उसने भी इस कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी को अपोज किया। एंड उसके जैसे लोग थे, उनका मानना था कि प्लानिंग में भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, और मनी सप्लाई में भी डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। उसने उसके जो थॉट्स है वो डिनेशनलाइजेशन ऑफ मनी इस बुक में लिखे थे, बट हिज व्यू वाज अराउंड 2000। उस समय वो पॉसिबल नहीं था, बट अभी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, और इंटरनेट रिवोल्यूशन की वजह से it was possible to create the cryptos. So why we need the control on money or the money supply? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कंट्रोल क्यों होना चाहिए? Why the cryptocurrencies की वैल्यू इतनी बढ़ रही है, लोग पैसे बना रहे हैं, जो 2010 में जिसके पास 1 रुपए में क्रिप्टो मिल रहा था, अभी उसकी वैल्यू लाखों में हो गई, वो तो करोड़पति हो गया, अरबोपति हो गया। No, there are many disadvantages and are there for the control of a central authority and government, because we can trust government। मैं इंटरनेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर गूगल करके मिलती है, बट कैन यू थिंक एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन? नहीं, आजकल किसी भी करके एडिट करके पिक्चर बनाए जा सकते हैं, फोटोज बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी टैंपर की जा सकती है। बट वी वांट द कंट्रोल ऑफ द मनी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों की इच्छा कभी भी बदल सकती है, कोई आदमी अच्छा होता है, कोई आदमी बुरा होता है, बट द गवर्नमेंट इज अ स्टेबल, दे यूज देयर सद्विवेक बुद्धि, वी कैन से कॉन्शियसनेस टू टेक एनी डिसीजन, एंड गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मनी करेंसी इज टू बी क्रिएटेड, उसको कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। हम लोग, आपको मालूम होगा, ये क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो करेंसी का जब हम लोग डेप्रिशिएट करती है, तो ऑफिशियल जो डेप्रिसिएशन करता है गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सॉरी आई फॉरगॉट दैट वर्ड। तो वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके ट्रांजैक्शन लेवल्स कितनी होनी चाहिए। सो देयर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द any national currency, because the trust of the society is in government or the central authority। उसके लिए पैसे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसकी जगह अगर मनी ने ले ली, तो इट विल बी वेरी डेंजरस। नोबडी, व्हाट इफ वी अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच? अगर हमने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अगर हमने ले लिया, तो क्या होगा? सोचो, इसकी छोड़ दो कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर दे, फिर भी उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना विदाउट बैकिंग ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी टू कंट्रोल द सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी, इट इज डिफिकल्ट टू यूज इट। इसीलिए आपने देखा कि बिटकॉइन जो है उसका एग्जांपल बिटकॉइन है, और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है।
सब लोग बोल रहे कि ये फ्यूचर होगा, बट फिएट करेंसी कैन नॉट बी रिप्लेस टोटली, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग रुपये में बता रहे हैं, बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग यूरो में बता रहे हैं, बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग यूएस डॉलर में बता रहे हैं। तो दैट्स व्हाई द फिएट करेंसी कैन नॉट बी रिप्लेस एट एनी वे। नहीं तो बिटकॉइन की वैल्यू किस किस यूनिट में आप लोग उसको मेजर करेंगे? So currency system is dependent on two things. That is the first is the creation of the currency. So who will do it for the cryptocurrency? Cryptocurrency की जो क्रिएशन है वो तो माइनिंग से होती है। वो कोई भी बंदा उठता है और वो नए टेक्नोलॉजी के आधार पे उसकी खुद की करेंसी माइनिंग करके एग्जिस्टेंस में लाता है। बट उसको बेस क्या है? सेकेंडली दिस हु विल कीप द ट्रैक एंड रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस? वो कौन? वो इंटरनेट के ऊपर रहेगा। बट हाँ, किसी ने पैसा स्मगलिंग से बनाया या और कोई गैर कानूनी मार्ग से उसने पैसा बनाया, तो हाउ द गवर्नमेंट कैन कॉट होल्ड ऑफ इट? उसको पकड़ेंगे कैसे? तो फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंक्स आर कीपिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स, बट फॉर क्रिप्टो नो फिजिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वो बोलते कि ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी में चैलेंजेस आता है कि बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस है, बट उनके सब एक्सचेंज के लिए पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी वन कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। क्रिप्टोस जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के ऊपर बिहेव करते हैं उसमें ओनली 2 पर्सन्स आर कीपिंग दिस रिकॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड। उसमें कभी भी चांसेस ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, एंड दिस इज मोर डेंजरस देन द ट्रस्ट ऑन एनी सेंट्रल अथॉरिटी। उससे अच्छा कोई गवर्नमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट रख सकते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकते हैं। सो इन केस ऑफ क्रिप्टो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम होता था पहले, बट पर्सन नेम सातोशी नाकामोटो ने उसके ऊपर सोल्यूशन दे दिया और उन्होंने बोले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर कोई हैक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बट सातोशी नाकामोटो कोई पर्सन है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नोबडी अंडरस्टैंड्स, इज अ अननोन पर्सन। और दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो एडवोकेट्स है क्रिप्टो करेंसीज के, वो बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रस्ट, कि हम लोग विश्वास का भी डिसेंट्रलाइज करेंगे। सो नो डाउट दैट टेक्नोलॉजी विल रिड्यूस द ह्यूमन मिस्टेक्स, इट इज एडवाइजेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो अच्छी हो सकती है जब वो कोई अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब उस क्रिप्टो करेंसी को कुछ ना कुछ अहमियत होगी या उसको कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। So Bitcoin is emerged as an alternative to fiat currency such as euro, dollar। मैंने अभी बताया, अभी वो सही है या गलत है ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। और किसी मात्रा में बिटकॉइन इज नाउ हैज बिकम नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी, तो उसको थोड़ा बहुत तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हम ऐसा मान लेते हैं। इथेरियम भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे कि मैटिक इंडियन लोगों ने इंडियन का फिएट करेंसी है, क्रिएट की हुई, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चलती है, तो वो भी कुछ ना कुछ बेसिस के ऊपर है, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। बट बाकी सारी जो 200 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, उनका उनका माँ बाप कौन है? हु विल द ओनर ऑफ इट? किसके ऊपर हम लोग किसको पकड़ेंगे? उसके बारे में अगर हमने इन्वेस्ट किया और सब पूरा फ्लॉप हो गया, सर्वर से निकाला गया, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस? बाकी दूसरा एक इंटर ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा पासवर्ड बनाते हैं, जीमेल के ऊपर पासवर्ड बनाते हैं, तो किसी न किसी सर्वर के ऊपर वो पासवर्ड सेव किया जाता है। अगर वो सर्वर ही निकला जाए, वो अभी वो सर्वर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो हु विल, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन व्हाट? उसके आंसर किसके पास नहीं है। इथेरियम जो है वो कोई मात्रा में वो ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करता है, और बट बाकी सारे जो अबाउट 200 क्रिप्टो करेंसीज भारत की है, उसके लिए उसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट डज इट, व्हाट इज इट इज यूजिंग फॉर विच पब्लिक पर्पजेस, पब्लिक यूज के लिए है, उसके लिए कोई भी बता नहीं सकता है। बहुत सारे मोबाइल के ऐप बहुत जगह पे आ गए हैं, आप जस्ट प्ले स्टोर पे जाओ तो यू विल गेट मेनी एप्स, बहुत सारी जोर शोर से एडवर्टाइजिंग हो रही है टू अट्रैक्ट कॉमन मैन, और उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं कि यू विल गेट इजी मनी। जैसे कि ड्रीम 11 का एग्जांपल है, या प्ले रमी, रमी खेलो पैसा कमाओ। अगर ऐसे ऐप से लोगों को पैसा मिलता,
So everyone would have left all his their jobs and they would have become the player on this Rummy and Dream 11. So they are addicting our young generation, and they are not addicting, they are addicting for the gambling, which is a very, very serious threat in case of allowing the cryptocurrencies in India. आपको मालूम होगा किसी भी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड्स ऑन टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, उसके एसेट्स कितने हैं, प्रोडक्टिविटी कितने। आपको मालूम होगा कि लोग बोलते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तब अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छी कंपनी शेयर्स बेच डालो। तो these companies have base, they have something to sell, they have something existence, उनकी बैलेंस शीट है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हम लोग स्टडी करते हैं। बट देयर इज नो सच काइंड ऑफ बेस फॉर द केस ऑफ द क्रिप्टो। सिर्फ उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो तो इजी है कि कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हुआ, इतनी किसकी प्राइस थी, इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट इज इट रियल? नहीं। सो मनी सप्लाई इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू and in India it is controlled by the RBI. Government अगर डेफिसिट बजट है तो गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर करेंसी, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। बट उसको भी गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकती क्योंकि उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स है। उसका सबसे पहला इफेक्ट है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम 1997 गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम। हम लोग उसके जगह पे अभी बोरो करते हैं, पब्लिक बोरोइंग उसके लिए यूज करते हैं। सो हाउ दिस कैन बी एप्लीकेबल टू द क्रिप्टोज? क्रिप्टोज जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उनको एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनका कोई कंपनी का नाम मालूम नहीं होता है, किसने जनरेट किया वो नहीं मालूम होता है, उसका सप्लाई कितना है दैट इज नॉट देयर। एंड हाउ एवरीथिंग वी इन्वेस्ट अवर हार्ड अर्न मनी। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा जरिया, अभी इन्वेस्ट करो फ्यूचर में उसका वैल्यू 10 फोल्ड हो जाएगा, आपके मालामाल हो जाओगे। सो और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सेड दैट द फ्यूचर इज डार्क फॉर दिस क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अभी रघुराम राजन जैसे लर्नेड पर्सन बोल रहे, वी इज अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल स्टेटस, वो बोलते कि इसका ये दिस इज नॉट गुड। So we have to think about it. There must be the complete transparency in the crypto transactions. We have to be very curious to see how the government of India control all these cryptos. Government उसके लिए law बना रहा है, लेकिन किस प्रकार से बनाएगा कौन कौन से issue, तो बहुत ही सोच समझ कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से होगा, हाउ इट विल हेल्प टू द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने भी अभी बजट में बताया कि हम लोग नई डिजिटल करेंसी ला रहे हैं इंडिया के ऑफिशियल, बिकॉज दुनिया में इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 17% है पूरे वर्ल्ड से। तो इंडिया आजकल पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंकिंग इकोनॉमी है। तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो उसके ऊपर इंडिया का प्रभाव रहता है, दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। सो ये जो क्रिप्टो करेंसीज का बबल है वो कभी ना कभी फूटने वाला है। There is a no need of law of by the government, but still, the government should take the proactive steps in advance so that it will save the common investors, young generation, and it will be useful in mitigating the financial risks involved in it. So, and the cryptocurrencies है जिनका objective उसको सर्व करना है सोसाइटी के लिए, वो तो रहेंगे, वो तो जाएंगे नहीं। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। आफ्टर ऑल आई वुड लाइक टू मेक सम सजेशंस फॉर दिस कि जो क्रिप्टो करेंसीज है तो फॉर यंग जनरेशन तो मुझे अच्छा पैसा मिलता है तो बुरी बात कोई नहीं है, बट ट्रेडिंग इन क्रिप्टोज रिक्वायर द फिएट करेंसी, सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अगर मुझे बिटकॉइन भी परचेस करना है तो मुझे रुपए चाहिए, मेरे पास डॉलर चाहिए या इंडियन रुपी चाहिए तो मैं परचेस कर सकता हूँ, बराबर। तो मेरे पास तो फिएट करेंसी नहीं रहेगी तो हाउ आई कैन, अगर इफ आई वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज तो मुझे प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग लेना चाहिए। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, क्या क्या होता है, कौन कौन से टूल्स है, ऑसिलेटर्स है, बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसका हमें स्टडी करना चाहिए देन एंड देयर। एंड व्हेन यू हैव अ थ्रो अवे मनी,
कि ये पैसा मुझे फेंकने का है, मुझे ये मेरे पास ये 1 लाख 2 लाख रुपए गए तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, देन यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द क्रिप्टो ट्रेडिंग। अदरवाइज बीवेयर ऑफ इट। आप उससे अच्छा, इंडियन कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा है, इंडियन कैपिटल मार्केट का स्टडी करो, बी अ इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर बन के आराम से पैसा कमाओ, बिकॉज डेली ट्रेडिंग में कोई भी पैसा नहीं बनाता है। इन एनी काइंड ऑफ मार्केट 95% आर लूजर्स एंड 5% आर गेनर। और जो 5% गेनर होते हैं वो बिग शार्क्स होते हैं, और कॉमन इन्वेस्टर ये छोटी छोटी मछलियां होती है, को एक साथ बहुत सारे शार्क उसको बहुत सारे कॉमन मैन को खा जाते हैं। एंड वॉलिडिटी मैंने अभी आपको दिखा है कि कितनी बिग रिस्क है कि जो आपको बूम कर सकती है या डूम कर सकती है। मैं वापस आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ, ग्राफ की तरफ। आप देखो कि देखिए, देखो अभी किधर तक गया, 387। सी द प्राइस ऑफ दिस, सी द प्राइस ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी कहाँ तक गई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो अभी हमने देखा था 15 मिनट पहले, तब उसकी प्राइस यहाँ पर थी 145, बाद में यहाँ पर आ गई 243,300 आ गई, 500 तक जाके आ गई। देखो यानी विद इन दिस स्पैन ऑफ फ्रॉम 1540 टू दिस 3 o'clock, सॉरी 4 o'clock, 20 मिनट में इतना सब हो गया। ये सिंगल मिनट का ग्राफ है। तो अगर सोचो जिसने यहाँ पे सेल किया होगा वो कितना लॉस में गया होगा, और जहाँ पे जिसने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसको अभी लॉस में चालू है, क्योंकि उसने 500 में खरीदा, अभी उसकी वैल्यू 400 चालू है। तो $100 बोलेगे तो 7,000 रुपए सीधा हो गया। सो इन दिस वे, अगर आपको इस ग्राफ का नॉलेज है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पास है, देन एंड देन ओनली यू कैन एंगेज इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट। अपना इंडियन मार्केट का पढ़ाई करो, दैट विल गिव यू द लॉट्स ऑफ opportunities. With this note, now the dais is open for question answers. Thank you very much. These are my references, and thank you for patient listening of my speech. Thank you very much. Thank you Hello, very sir. much, sir. Yeah. Very deep and insightful lecture you delivered. And so, as you said, this session is open to question answer now. Students ला जर काही questions विचारायचे असतील, येस कोणालाही प्रश्न असतील मराठी हिंदी इंग्लिश मध्ये विचारू शकता. I will try to pacify you, try to give you the answers to your questions. Thank you. Even teachers, if their teachers are there, because this is a very hot cake today, it has become a buzzword. Myself also was attracted by these valuations of Bitcoin, but before going into that, I decided to do the research on that, and that's why once 2 months back I told Shindre sir ki I am just studying, I am just researching over this Bitcoin trading, as I know about the Indian capital market, stock market. तो सर ने इसीलिए मेरे ख्याल से दिया होगा. थैंक यू. सर मीच एक प्रश्न विचारतो. येस चलेगा, चालेल बोला सर. एक मिनिट गोरे सर. येस. ते चॅट बॉक्स मध्ये काही प्रश्न आहेत. सोनटक्के सर बघा. हा एकच मिनिट चॅट बॉक्स बघतो. येस. हा चॅट बॉक्स मध्ये एक पहिला प्रश्न असा आहे की सर, डू यू थिंक दॅट मेनी अदर कंट्रीज विल कम आउट विथ डिजिटल करन्सी लाईक इंडिया, अँड इज डिजिटल करन्सी द फ्युचर ऑफ फायनान्शियल मार्केट? I am very thankful to asking for this. It's a very good question. Actually, it is asked. Digital currency is a definitely future. As I said कि उसके लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए कि जो उसको कंट्रोल करे, उसका सप्लाई और उसकी डिमांड. हम लोग नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर, किसी भी कंट्री का नेशनल गवर्नमेंट होता है, उसकी सेंट्रल बैंक होती है, उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई our RBI has decided to create introduce a digital currency. तो ये तो आने वाले समय में तय है कि डिजिटल करेंसी आएगी, बट वो 100% फिएट करेंसी यानी फिजिकल करेंसी को रिप्लेस नहीं कर सकेगी.
because all we are people are habitual for so many 2000 सालों से 2000 साल ने हम लोग 400-500 साल से बोलेंगे कि 200 साल से लेटेस्ट बाय लेटेस्ट वी आर हैबिचुअल टू यूज द फिजिकल करेंसी. उसके बेसिस के आधार पे ही मनी अभी सर में सब लोगों को मालूम है, वी आर द प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, मनी सप्लाईज इज क्रिएटेड ऑन द प्राइमरी मनी which is called as a your bank deposits and a currency notes and coins. तो उसके ऊपर ही डिजिटल करेंसी का निर्माण होगा. इसके लिए इट विल बी अ फ्यूचर, लेकिन एवरी कंट्री विल थिंक प्रॉपरली एंड देन ओनली दे विल ब्रिंग देयर डिजिटल करेंसी. ये तो फ्यूचर है, दैट्स ट्रू. वी कांट टोटली रिजेक्ट दिस डिजिटल करेंसी कन्सेप्ट. येस सर. हा विचारा सर, तुम्ही विचारत होतात मला. अजून एकच प्रश्न आहे मला, दुसरा प्रश्न आहे का सर? अजून नाही ना? नाही, चॅट बॉक्स मध्ये तरी नाही. आणखी कोणी विचारणार असेल तर विचारा. मी तोपर्यंत सरांना एक प्रश्न मला पण पडलेला प्रश्न विचारतो. येस येस सर, येस सर. सर आता बिटकॉइन्स आले आणि तुम्ही सांगितलं की याच्यावरती कोणाची मालकी नसते. बरोबर. आणि मग याला बिटकॉइन्स जर असं रेग्युलेट झालं, खूप मोठ्या प्रमाणात जर वाढलं, तर त्याचा टॅक्स सिस्टम वरती काय परिणाम होईल? हा एक प्रश्न. आणि दुसरी गोष्ट, मॉनिटरी पॉलिसी जी आहे ती सुद्धा आपली या बिटकॉइन्सच्या किंवा इव्हन नवीन जी डिजिटल करन्सी येणार आहे त्याच्यावरती सुद्धा मॉनिटरी पॉलिसीवरती त्याचा काय परिणाम होईल? बरोबर आहे सर. पहिल्या प्रश्नाचं ते उत्तर देतो. टॅक्सिंगचा काय प्रॉब्लेम होईल? सध्या तरी म्हणजे अगदी या बजेट पर्यंत, मराठीत सांगतो चालेल ना? हा. या बजेट पर्यंत क्रिप्टो करन्सीवर टॅक्स लावायचा की नाही सगळी लोकांच्या मनामध्ये शंका होती. पण बिग इंटरनॅशनल एक्झिस्टन्स ऑफ क्रिप्टो करन्सीज, जे आता बायनान्स सारखे जे इंटरनॅशनल एक्सचेंज आहेत, नंबर 1 एक्सचेंज आहेत, त्याला इंडियन गव्हर्नमेंट काय करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने पहिला मार्ग शोधला की जे इंडियन लोकांची 6 लाख कोटी संपत्ती त्याच्यामध्ये आहे, 6 लाख करोड्स ऑफ रुपीज. मग हे लोक कोणतरी मिळवणार, कोणतरी घालवणार, मग त्यांना टॅक्स करायला पाहिजे. गव्हर्नमेंट शुड गेट समथिंग. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 30% पूरा टैक्सिंग सिस्टम लगा दी. और टैक्सेशन के ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कैपिटल मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स होता है कि अगर आपने मुनाफा कमाया तो यू हैव टू पे 30% कैपिटल गेन टैक्स. उसी प्रकार से सरकार ने अभी उसके ऊपर भी टैक्स लगाया कि आपके अकाउंट में बाहर से पैसा आएगा फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर. इसके ऊपर अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मैं बता दूंगा. योर सेकंड क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा भूल गया, कैन यू रिपीट दैट सेकंड क्वेश्चन? मॉनेटरी पॉलिसी का क्या पूछा? मॉनिटरी पॉलिसी. आपण डिजिटल करन्सी आणली, त्याचा मॉनिटरी पॉलिसीवरती काय परिणाम? हा, आता तुम्हाला सांगतो, बिटकॉइनचं एक वैशिष्ट्य असं, त्याची व्हॅल्यू एवढी का वाढली? कारण त्याचा सप्लाय फिक्स आहे. $21 बिलियन, $21 बिलियन एवढा त्याचा सप्लाय, आणि म्हणून त्याची व्हॅल्यू काय होते वाटते. म्हणजे त्याच्या क्रिएटर्सनी त्या अल्गोरिदम मध्येच ते करून ठेवलंय की त्याचा सप्लाय $21 बिलियन पुढे जाणार नाही. बरोबर. तसंच जी कोणती डिजिटल करन्सी गव्हर्नमेंट क्रिएट करेल, तर सॉलिड आहे ना की सेंट्रल बँक अथॉरिटी जी आपल्या प्रत्येक कंट्रीमध्ये आहे, तीच त्याची इश्युअन्स ऑफ करन्सी ही तिच्याकडे ऑथॉरिटी असते. दुसरं कोणीच ते क्रिएट करू शकत नाही. त्यामुळे डिजिटल करन्सी जरी इंडियाने, आरबीआयने इंट्रोड्यूस केली, तर त्याचा सप्लाय किती करायचा तो बिटकॉइन प्रमाणे ते पण ठरवतील की एवढीच करन्सी आम्ही क्रिएट करणार. कारण ह्या डिजिटल करन्सी क्रिएट करायला सुद्धा हायफाय टेक्नॉलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला म्हणतात, ती काही स्वस्त नाहीये. इट इज अ वेरी वेरी कॉस्टली, एंड दैट्स व्हाई उसका मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन बाय वे ऑफ यूजिंग वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो सेम वे डिजिटल करेंसी के लिए भी उस प्रकार की पॉलिसी रहेगी, मॉनेटरी पॉलिसी में रहेगा, एंड देन दे कैन कंट्रोल द इशू और द एब्सॉर्प्शन ऑफ द डिजिटल करेंसी. जैसे कि हम लोग फिजिकल करेंसी का आरबीआई अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो बॉन्ड्स इशू करके वो पैसा एब्सॉर्ब करती है, और जब डिप्रेशन रहेगा तब पैसा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में छोड़ती है. वैसे ही उसका कंट्रोल होगा. थँक्यू सर. या एनीबडी एल्स? कोणाला समजलं, सगळ्यांना बरोबर समजलं की नाही तेवढं मला सांगा. म्हणजे इट विल बी व्हेरी युजफुल फॉर मी
की सो दॅट आय कॅन मेक इट मोर सिम्पल फॉर द स्टुडंट्स. हा माझा फार आवडीचा विषय झालेला आहे आणि आय वॉन्ट टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस. कारण आताच मी तुम्हाला दाखवलं की मगाशी, आता हे पण तुम्हाला आता परत दाखवतो की ही प्राइस इतकी चॅट फ्लक्च्युएट. बॉक्स मध्ये आणखी 2 गोष्टी विचारल्या. अच्छा आलेत का? हा ओके ओके, एकच मिनिट, चॅट बॉक्स कुठे गेला? हा हा येस सर, मिलियन और बिलियन? बिलियन, 21 बिलियन. हॅलो, पहिला प्रश्न उत्तर आहे सप्लाय ऑफ, कुलदीप मिश्राने विचारलंय, सप्लाय ऑफ बिटकॉइन इज लिमिटेड अप टू 21 बिलियन. सर Sir, क्रिप्टो, sorry to हाँ. disturb you, sir. Kuldeep Mishra here. हाँ, हाँ. 21 billion means in Indian rupees कितना होगा? इंडियन रुपीस का बात नहीं है बेटा, ये यूएस डॉलर में उन्होंने सप्लाई उसका फिक्स किया हुआ है. Sir, sorry to disturb, हाँ. but जहाँ तक मैंने पढ़ा ना last time, हाँ यस तो यस 21 million है. That is 2 crore 10 lakh something. इसीलिए तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है. मिलियन और बिलियन में कंफ्यूजन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. बट इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज अ लिमिटेड. उसने उसको लिमिटेड किया है. दैट्स व्हाई द व्हेन द सप्लाई, किसी भी चीज का सप्लाई कम हो जाता है तो वो बढ़ सकता है. मैं भी उसका एक, इट माइट बी मिलियन आपने पढ़ा होगा तो मिलियन रहेगा. आई एम नॉट उसके ऊपर मैं डिफर करना चाहता हूँ कि मिलियन बिलियन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिमिटेड है वो इंपॉर्टेंट है. कोई कोई क्रिप्टो करेंसीज की बहुत ज्यादा हो जाती है. तो कुलदीप जी, आपके क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका आंसर बराबर है, डोंट वरी. सेकंड क्वेश्चन है 21 बिलियन या मिलियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट इज लिमिटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट. सर क्रिप्टो करेंसी की प्राइस किस बेस पे है, इतना अप एंड डाउन वैल्यू क्यों होता है? आई वांट टू, वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड. ये अप एंड डाउन क्यों होता है? क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड वाइड उसकी ट्रेडिंग होती है और बायर्स और सेलर्स को, आई टोल्ड यू इट्स अ वे ऑफ अ व्हाट. हर एक क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है. देन इथेरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी वो सिस्टम है, और मैटिक है उसकी भी कुछ बेसिक सिस्टम है. तो हर एक कॉइन के पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है, बराबर है. लेकिन ऐसे कुछ थोड़े कॉइन छोड़ देंगे तो बाकी के जो कॉइन्स है उनको कोई बेस नहीं है. उनकी डिमांड और सप्लाई इसी सिंपल फॉर्मूले के ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ती है और कम होती है. अभी मैं आपको और बताता हूँ, और एक थोड़ा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. तो उसके लिए बेस नहीं है, उसका फिक्स बेस नहीं है. मैंने आपको बोला ना कि उसका सप्लाई कितना है वो बेस है. उसका सप्लाई लिमिटेड है या अनलिमिटेड, उसका उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जानकारी लोगों को है. लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है ये किसी को मालूम नहीं होता है. वेरी फ्यू करेंसी के बारे में ऐसी मालूमात है, लेकिन बहुत सारे जो है, आपको मैं अगर एक्सचेंज लेके जाऊं तो आप देखोगे तो इन करेंसीज का आपको कुछ मालूम ही नहीं होता. उसकी वैल्यू कितनी है, उसका टर्नओवर कितना है, उसका पब्लिक यूटिलिटी क्या है, व्हाई द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इसका मैं आंसर नहीं दे सकता है. सर डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर बिटकॉइन ट्रेडिंग getting banned in the future, it will be used underground for various other illegal market activities? Yes. इसका आंसर स्टूडेंट यस है. किसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक अभी वर्मा ने ये क्वेश्चन पूछा है. बिटकॉइन ट्रेडिंग बैन भी करेंगे तो बहुत सारी चीजें इंडिया में बैन है, फिर भी उसका स्मगलिंग होता ही है ना. ड्रग्स आर बैन तो उसका ट्रेडिंग तो होता ही है ना. इन द सेम वे ये जो आपको डार्क नेट मालूम होगा, हम लोग यूज करते हैं वो इंटरनेट होता है. दूसरा जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो हैकर्स यूज करते हैं उसको डार्क नेट बोलते हैं. तो डार्क नेट में अंडरग्राउंड एक्टिविटी चलती है, इलीगल मार्केट चलती है. तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती. दैट्स ट्रू, 100% आई एम एग्री विद यू. तो ये आंसर तो बहुत वेरी डिफिकल्ट है उसका आंसर देना कि इट इज नॉट कंट्रोलेबल एट ऑल. तो उसके लिए जितना कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि इंडिया में 2 मनी मार्केट के 2 सेक्टर्स है, वन इज अ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर और दूसरा इज
अनइन्स्टिट्यूशनल, हा मराठीत सांगू का, तर आपल्याकडे 2 सेक्टर्स आहेत की आरबीआय सुद्धा ज्या बँका वगैरे आहेत त्या आपल्या संघटित क्षेत्रावर कंट्रोल करू शकते, पण असंघटित क्षेत्र आहे आपल्याकडे. एवढं मोदींनी नोटबंदी करून सुद्धा ब्लॅक मार्केट चालूच आहे, करप्शन चालूच आहे, बरोबर की नाही? ते कंट्रोल होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यासाठी तुम्हाला जर ते कंट्रोल करायचं असेल तर तुमच्या मनामध्ये लोकांमध्ये त्याच्यावरची भावना आणावी लागेल. देन ओनली इट इज अ कंट्रोलेबल. त्यामुळे गव्हर्नमेंट अशी इच्छा करते की जे कंट्रोलेबल आहे ते कंट्रोल करावं. ते एकदा जर अनकंट्रोल झालं, बिटकॉइनच्या हातात आपण सगळं दिलं, इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इकॉनॉमी. और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनका कंट्रोल दूसरे किसी के हाथ में जाए. दैट इज अ बिग इशू फॉर बैनिंग ऑल दोज क्रिप्टो करेंसीज. दैट्स इट. अभी देखिए इसका वैल्यू देखो, बिटकॉइन का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कि कितना था, एट 16-17 इसका वैल्यू नीचे आया था और अभी वापस इसका वैल्यू बढ़ने लगा है. इट हैज गॉन अप टू 1 सेकंड, मैं जरा ये हिला करता हूं, इस तरफ लेता हूं. सी इसका वैल्यू कितना ऊपर गया था, टिल 794, 778, और वापस से नीचे आके वापस ऊपर जा रहा है. तो इस प्रकार से ये जो वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन है ये डिमांड और सप्लाई से चल रहा है. किसी को मालूम नहीं पड़ता कि इसकी कीमत क्यों बढ़ रही है और किसी को मालूम नहीं पड़ता इसकी कीमत कम क्यों हो रही है. वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू. अभी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये क्यों बढ़ रही है, किसके आधार पे इसकी कीमत बढ़ती है, किसके आधार पे इसकी कीमत होती है. कुछ नहीं, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने के उससे मालूम पड़ता है कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, एंड द वैल्यू इज डिसाइडेड ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सब डिजिटलाइज प्रोग्राम है, अल्गोरिदमिक प्रोग्राम्स है. Okay, very nice, Professor Vittal Sontakke, and I am very happy that I got a very scholar research student, and Professor Sontakke is doing PhD under my guidance, तर and he is keeping the knowledge तुमच्यामुळेच on आम्ही एवढे हुशार झालो. cryptocurrency. So I feel proud of you, Professor Sontakke. And Gore sir asked Madam to propose the vote of thanks. त्याच्या अगोदर सर मला आपण संधी दिलीत आणि माझ्यावर विश्वास ठेवलात. खरं म्हणजे शेंद्रे सर माझे गाईड आहेत. मला अभिमान वाटतो की प्रगती कॉलेजमध्ये मी नेहमी येऊन, आता माझे सिनॉप्सिस सबमिट झाले, पीएचडी पण लवकर होईल, पण ह्या सर्वांचं केंद्रस्थान आमचे डॉक्टर शेंद्रे सर आहेत. त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी अनेक प्रकार गाईड केलं. विद्यार्थी म्हणून त्यांनी मला कधीच वागवलं नाही, एक मित्र म्हणून सगळे नेहमी ते मार्गदर्शन करत गेले. अँड बिकॉज ऑफ दॅट I developed the habit of research, good research, and that is only because of blessings of him. That's it. Yes. Thank you. Yes. Thank Yes. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Professor Rupali Devulekar madam to propose the vote. Thank you, Dr. Gore sir. Very good afternoon to all of you. Myself, Rupali Devulekar, faculty of Department of Economics of our college. It's my great privilege to propose the vote of thanks for the second day, 1 week online intercollegiate lecture series. I am very much thankful to today's resource person, Professor Vittal Sontakke sir, Vice Principal of Kirti College, Dadar, for accepting our invitation as well as his valuable time to share his view on the topic cryptocurrencies, past, present, and future of India. Sir, really, all the participants have been added the knowledge on this innovative topic. Also, you have covered many aspects related to cryptocurrencies. Sir, we are expecting the same cooperation in future also. I am also thankful to all participants for your patience. Thank you. Thank you so much. Over to you, Gore Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, Gore Thank you. sir, and Pragati College for giving me an opportunity. And have a nice day to you all. Thank you, sir. Nice presentation, and you have covered the entire. You have given the Aspects. justice to the topic. पण सर खरं सांगू Yes. ह्याच्यामध्ये एवढी लोकांना ग्रीड निर्माण करताना मी